guys, this is Ayushi Verma from Investolearn Academy. I welcome you all to this channel. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को यूज करके अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने एक घर खरीदा और शी इनवाइटेड मी फॉर द हाउस वार्मिंग पार्टी। सो जब मैं वहां गई मैंने देखा बहुत सारे लोग आए थे। उसका एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसके एक रिलेटिव के साथ में। सो रिलेटिव ने पूछा कि आपने ये घर कितने का खरीदा। मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये घर उसने 5 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब ये सुन के रिलेटिव ने कहा कि जो इस घर का एक्चुअल वर्थ है, रियल वर्थ है, वो 4.5 करोड़ है और आपने 5 करोड़ में खरीदा, मतलब आपने महंगे में खरीदा। ये सुन के मेरी फ्रेंड थोड़ा शॉक हो गई, थोड़ा सोच में पड़ गई कि क्या वाकई में उसने महंगे प्राइस पे खरीद लिया। बिकॉज उसको रियल वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो पता ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि 4.5 करोड़ उसका वर्थ था और मैंने इसे महंगे में खरीदा है। यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, मैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक की बात कर रही हूँ जो आपको जानना जरूरी है कि जब आप कोई प्रोडक्ट या एसेट खरीदते हो तो उसका रियल वर्थ है क्या। सिमिलर एक्सपेक्टेशन हम तब रखते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जब हम स्टॉक्स को पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि एक स्टॉक का रियल वर्थ मतलब उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या है, तो हम ये बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टॉक हमें अपने पोर्टफोलियो के लिए रखना चाहिए या नहीं। सो देखा होगा आपने, जैसे जब आप मॉल जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अगर वहां कोई डिस्काउंट चल रहा है या सेल चल रहा है तो बहुत भीड़ होता है। बिकॉज पीपल आर रेडी टू बाय एट द डिस्काउंट प्राइस। उन्हें पता है कि इसका वर्थ अगर एक एक्स अमाउंट है तो वो एक्स अमाउंट से आज कम पे मिल रहा है, अवेलेबल है, तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। सिमिलरली जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करती हूँ तो हम स्टॉक्स को भी ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी कम पे अवेलेबल है। तो आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो में कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक इन्वेस्टर के लिए इसे क्यों समझना चाहिए और ये कैसे यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। So the dictionary meaning of intrinsic means the essential nature of something or belonging to the real nature of something. Intrinsic value is the anticipated value of a company's stock and it can be determined through fundamental analysis. So in short, the intrinsic value is the real value or the fair value only. It may or may not be the same as the current market value. So let's take an example. Let's say a particular stock is trading at rupees 1000 and the analysts are very bullish and they see that the stock price has to be 1500. So in this case, the 1500 is the intrinsic value and 1000 is the current market value. So it creates a very good opportunity for the investors. They can buy at rupees 1000 and come out from this investment at rupees 1500, and thus the two prices creates a difference of 50% margin. So to calculate the intrinsic value, the analyst has to look for both qualitative and quantitative factors. If you want to know more about these two factors, check out our previous videos. So once it is determined, then the calculated intrinsic value is then compared with the current market price to see if the stock price is overvalued or undervalued. Now, there could be two possibilities for an investor, and out of these two possibilities, one is ideal for the investor. Possibility 1, if the current market price is higher than the intrinsic value, or rather I should say the intrinsic value is lesser than the current market price. So this is the time when there is the investor should not enter into any particular investment because the price is already overpriced. And this is the time when an investor is already having some investments, they can come out from the investments. The second possibility, when the intrinsic value is lesser than the current market value. Now this is the time, the best time for an investor to enter into a stock, to enter into an investment. Because at the buyer, the investor will buy at the lower price and he can sell at a higher price. So he can get a price differential gain also. Now the next question arises, why the intrinsic value is different from market value? Intrinsic value is basically means the true value, the true worth of the stock, whereas the market value is determined by the external fluctuations in the stock price. Now let us see the calculation of intrinsic value.
Intrinsic value calculation is not an easy task, but there are certain methods by which we can actually calculate it. So in this video, we are going to share the three methods, and out of which the first is asset-based valuation. In this method, the analyst will add up all the assets of the companies, whether it's tangible or intangible, and then they will subtract this amount from the liabilities of the companies. So this is a very simple method. Whatever the assets you will be having, add up all the amount and then just deduct it from the liabilities amount. The second way of calculating intrinsic value is analysis on the basis of financial and technical metric. An easy way of determining intrinsic value is using any financial metric such as PE ratio, and to calculate the PE ratio you need to have the share price and you can divide it with the earning per share. Another way to look at the analysis, to look at finding out the intrinsic value, is to have the technical metric. Whereas the technical analyst involves the charts, they will look at the charts, look at various indicators, look at price, and then they will try to find out where the stock price will go, whether it's going up or down. The third method is discounted cash flow analysis. This is the most accurate method, as it uses the time value of money with the estimation of cash flow of the business. So in other words, the DCF method uses the free cash flow of the business to determine the intrinsic value of the share. So it tells the investor whether the investment he is making today would give him the anticipated return in future. So the entire concept of DCF is based on the assumption that a rupee today is better than rupee tomorrow. It means that whatever the money you have in your hand, that can be invested and the value can be increased. So the definition of DCF could be to forecast the future cash flow of the business and discounted it to the present value by using the company's weighted average cost of capital. This can be calculated with the following formula, where the CF is the cash flow, N is the number of years before the cash flow, and R is the interest rate. It can be calculated with the help of the Excel sheets. So I hope you understand the concept of intrinsic value in this video, and next video, we will be talking about the concept of CAGR and the time value of money. So till then, happy learning and be safe at home.